Hello friends, welcome to my channel. I hope you all will be good. इस सेशन में हम एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ने वाले हैं. काफ़ी बच्चों का डाउट होता है कि उनको एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस समझ नहीं आता है. इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे. चलिए शुरू करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले समझ लेते हैं वॉइस होता क्या है. व्हाट इज वॉइस? Voice is the form of a verb that indirect whether the subject of the sentence performs or receives the action. First देखते हैं active voice. If the action is done by the subject, then it is an active voice. ठीक है, अगर कोई subject कोई action करता है तो वो क्या कहलाता है? Active voice. Next देखते हैं passive voice. If the action is done to the subject, then it is an passive voice. एग्जाम्पल से समझते हैं. हरी मेड अ मिस्टेक. हरी इज अ सब्जेक्ट, मेड इज अ वर्ब, मिस्टेक इज द ऑब्जेक्ट. हियर हरी परफॉर्म्स एन एक्शन. यहाँ हरी मिस्टेक कर रहा है, इसका मतलब हरी यहाँ पे एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है. इसका मतलब ये सेंटेंस क्या हुआ? ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस हुआ. नेक्स्ट देखते हैं. अ मिस्टेक वॉज मेड बाय हरी. यहाँ मिस्टेक की गई है जिसको हरी ने किया. यहाँ पे हरी ने कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया है. यहाँ जो फोकस है वो सिर्फ एक्शन पे फोकस किया गया, लेकिन इस एक्शन को किसने किया है यहाँ पे फोकस नहीं है, इसलिए किस में आएगा? पैसिव वॉइस में आएगा. यहाँ पे हम देख सकते हैं जो ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट था वो पैसिव में क्या हो जाता है? वो सब्जेक्ट हो जाता है. वर्ब अकॉर्डिंग टू रूल चेंज होता है, वो आगे देखेंगे. हरी जो कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था, पैसिव में आके वो क्या बन जाता है? वो ऑब्जेक्ट हो जाता है. आगे बढ़ते हैं. इन सेंटेंस फर्स्ट द सब्जेक्ट हरी परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ मिस्टेक, सो द सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस. इन सेंटेंस टू द सब्जेक्ट ए मिस्टेक इज नॉट डूइंग एनीथिंग, इंस्टीड इट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन, सो द सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस. Changing active voice into passive voice. What is the rule? While changing the sentence of active voice into passive voice, follow the rules given below. First, the object of the active verb becomes the subject in passive voice. जैसा मैंने आपको बताया था, जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में वो सब्जेक्ट बन जाता है किसमें? पैसिव वॉइस में. द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वर्ब इज मेड ऑब्जेक्ट इन द पैसिव voice followed by in most of the cases. However, when the subject is unknown, by is not required. Example: Rohan eats an apple. It is active voice. An apple is eaten by Rohan. It is passive voice. यहाँ पे रोहन सब्जेक्ट था तो पैसिव में आके रोहन क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया. यहाँ एप्पल ऑब्जेक्ट था, पैसिव में आके एप्पल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया. और जो यहाँ पे वर्ब यूज होगी वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, जो कि यहाँ पे सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वर्ब होगी वो यूज होगी. नेक्स्ट, ओनली ट्रांसिटिव वर्ब आर चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस बिकॉज एन इनट्रांसिटिव वर्ब सच एज गो, वॉक एक्सेट्रा हैज नो ऑब्जेक्ट. इट मीन्स जहाँ ऑब्जेक्ट होगा सिर्फ वही एक्टिव वॉइस ही पैसिव वॉइस में चेंज होंगी. नेक्स्ट, while changing an object of the active verb into the subject of the passive verb, personal pronoun are changed as follow. I changed into me, we changed into us, he into him, she into her, they into them, you into you, it into it. You and it remains the same both in active voice and passive voice. Now let us discuss in detail the changes in verb from active to passive voice in various tense forms. Present indefinite tense. What is the rule of active voice? Root forms of the verb means verb की first form, sometimes with the s and es. Example: Rohit waters the plants. Does she clean the
floor. Let's understand passive. Passive, what the rule of passive voice? Is mr plus past participle of the verb means verb की third form of the verb. What example? The plants are watered by Rohit. Here Rohit was subject, becomes object in passive voice, and the plants was object, becomes subject in passive voice. Plants are plural, then followed by are. Past participle verb की third form means used, watered. Is the floor cleaned by her? Present continuous tense. Active voice is mr plus ing forms of the verb. Example, she is cooking food. In a passive voice, is mr plus being plus past participle forms of the verb. Example, food, which is object here, becomes subject here, is being cooked by her. Her, she, who is subject in active voice, becomes object in passive voice. She changed into her in passive voice. Present perfect tense. Active, what is the rule of active voice? Has, have plus past participle form of the verb. Example, the car has hit an old man. What is the rule of passive voice? Has, have plus been plus past participle form of the verb. Example, an old man has been hit by the car. Old man, who is object in active voice, becomes subject in passive voice. Car, which is the subject in active voice, becomes object in passive voice. Past indefinite tense. What is the rule of active voice? Past tense of the verb means verb की second form. Example, Rohit bought a laptop. What is the rule of passive voice? Was, were plus past participle form of the verb. Example, a laptop was brought by Rohit. Laptop, which is object in active voice, becomes subject in passive voice. Laptop is singular, that is the reason is followed by was. Past participle verb की third form brought by Rohit. Rohit, who is subject in active voice, becomes object in passive voice. Past continuous tense. Active voice. What is the rule of active voice? Was, were plus ing form of the verb. Example, Rohan was cleaning the car. Passive voice. What is the rule of passive voice? Was, were plus being plus past participle form of the verb. Example, the car was being cleaned by Rohan. Car, which is object in active voice, becomes subject in passive voice. Car is singular, that is the reason, followed by was, followed by being, followed by past participle form of the verb, cleaned by Rohan, who is subject in active voice, become object in passive voice. Past perfect tense. What is the rule of active voice? Had plus past participle of the verb. Example, she had won the first prize. What is the rule of passive voice? Had plus been plus past participle form of the verb. Example, the first prize had been won by her. I hope ये समझ आ रहा होगा. जो यहाँ पे सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, शी यहाँ पे सब्जेक्ट थी तो यहाँ पे क्या बन गया? ऑब्जेक्ट, यानी कि हर. फर्स्ट प्राइज यहाँ पे ऑब्जेक्ट थे, यहाँ पे क्या बन गया? सब्जेक्ट. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. एक्टिव, will, shall plus root form of the verb means verb की first form. Example, I will do it. Passive voice,
will, shall plus be plus past participle form of the verb. Example, it will be done by me. I, who is subject in active voice, becomes object in passive voice. It, which is object in active voice, becomes subject in passive voice, followed by will, be, verb की third form. Next, future continuous tense. Verbs in the future continuous tense cannot be changed to the passive voice. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज नहीं किया जा सकता है, ये याद रखना है. फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस विल, शैल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. एग्जाम्पल, आई विल हैव रिटन द लेटर. With the rule of passive voice, will plus have plus been plus past participle form of the verb. Example, the letter will have been written by me. अब modal verb की देख लेते हैं. While changing modal verbs such as can, could, shall, should, will, would, may, might, must, ought to, has to, have to, and had to, the verb is changed to the third form and be is added before the verb. Let's understand by example. He must learn this book. Active voice change to passive voice. This book, object becomes subject, means this book. Must, and after followed by be, learned, verb की third form, by him. He, who is subject in active voice, become object in passive voice. We should pay our taxes on time. Our taxes, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है? Our taxes हैं. Our taxes should be paid on time. यहाँ पे वी कोई काम नहीं कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे वी लगाएं या न लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ से. ठीक है, आज इतना ही करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इम्पैरेटिव सेंटेंस और कुछ सेंटेंस और बच रहे हैं जिसकी प्रैक्टिस नेक्स्ट क्लास में, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे. और अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. और अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं, मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं. टिल देन, थैंक यू सो मच. बाय बाय.